you heard Maulana Fazl Rahman declaring in categoric terms that the regime change. यार आप लोग, यार पीटीआई के लोग इनको हटाएं यहाँ से, आप हट जाइए। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? तो सब नजर आएंगे ताकि सब नजर आए। सही सीधी खड़ी रहेंगी तो सब खड़े भी नजर आएंगे। Maulana Fazl Rahman finally conceded that the regime change in April 2022 was the outcome of a conspiracy that was hedged against the PTI government by former Chief of Army Staff General Bajwa. He has also confirmed that the removal of the PTI regime was because of the two fundamental stances which former Prime Minister and founder of PTI Imran Khan had taken. Number one, he had said absolutely not. And secondly, he had told the European and the Western masters that Gulami na manzoor. Ladies and gentlemen, the saga, the story of Cypher, for which Imran Khan has filed a petition in Supreme Court of Pakistan, alleging therein that it ought to be inquired into, it ought to be looked into. And now the statements by the two former allies of the regime which brought about the fall of the PTI government, Mr. Maulana Fazl Rahman and Ali Wazir, they both have come in very unequivocal terms stating that the removal of the PTI regime was because of the American pressure, in consequence whereof the then Army Chief, General Bajwa, while in collusion with the PDM, which comprised of Shahbaz Sharif, People Party and others, they brought about this disaster, number one. Number two, Pakistan Tehreek-e-Insaf is very grateful to the international media and to the social media of Pakistan, because it was through your efforts, 7 days before the holding of the polls, it was the international media and the social media of Pakistan which spread each and every news pertaining to the election. And on the 9th of February, the whole world news agencies were inundated with the most phenomenal news declaring that in Pakistan the results were fabricated in such a pathetic manner that those in certain cases who stood at serial number 7 of the electoral result were given victories. Ladies and gentlemen, this was not only a theft of the mandate of the people of Pakistan. The people gave their very categorical decision for Khan and for the PTI. Now, the holding of this media conference was to bring before you people all the candidates along with their original Form 45, telling you people that you need to know one thing. Form 45 is the fundamental document, it is the principal document, and it is the core document on the strength whereof Form 47 and other ensuing electoral processes is formulated. There can't be any dichotomy, any contrast into the two documents. The Form 45, because in any case, if there is a contrast in the two documents, the Form 45 will precede. The Form 45 will overrule the effect of any maneuvering, fabrication, any addition or alteration introduced in Form 47. I repeat that all the results in election are to be based exactly on the strength of entries recorded in Form 45. Now there is another significant importance attached to the Form 45. It is issued by the presiding officer or the assistant presiding officer, as the case may be, wherein he is required to thumb impress it. Now, in this scientifically advanced world, where everything has been conceived or invented by the mankind
to discern or decipher between the original and the fraud. The thumb impression alone is the only and the sole element which can't be fabricated. No science can fabricate thumb impression mark. And each Form 45 contains thumb impression of the officials of the electoral process. So, if 7, 10, or 15, Form 15 are identical, if they are identical and only one Form 15 which is fabricated or maneuvered for the benefit of the candidate who are mostly belonging to MQM, Pakistan People Party, and PMLN, then it is obvious that the results have been rigged. Now, the solution lies, please, आप जरा खामोश हो जाएं, आप क्यों शोर कर रहे हैं? यार पीटीआई के दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई शोर कर रहा है उसको बाहर निकालो. Now, a question may hit your mind as to whether we need to go for the tribunals, which may, in its process, consume more than years. You need to know that the fundamental purpose behind fabrication and forgery of the result is to enable Shahbaz Sharif to take over the reins of the government as a prime minister. Because they know that our judicial system is so corrupt, is so rotten, and is so pulverized that under no circumstances we could have a remote expectation of seeing justice done to the people of Pakistan. What is the solution? There is such an easy and the most scientific solution to this dispute. All the Form 45 presented here today before the media may be sent to the Nadra for the verification of the thumb impression of the electoral staff. If it substantiates and endorses that the thumb impression belong to the officials of the returning officer, then it conclusively determines that the Form 45 are genuine, and in all circumstances it must compulsorily base all its results on the strength of Form 45. Kindly जरा आप खामोश हो जाएं भाई, आप लोग ये जरा खामोश कर लें. Finally, I want to tell you people that tomorrow the Khan has requested Pakistanis that for one last time you need to come out to guard against the fraud, treachery, and the fallacy that has been committed. And in the process, bear in mind, when we went for the elections, our legs and hands were tied up. And in the process to compel PTI either to deter away or to boycott the election, the state and the caretakers committed such heinous crimes and have adopted such ignominious method for the achievement of their political ends that the time won't turn, and the human rights, human dignity, and human conscience appears a hook. So, dear Pakistanis, Khan wants you out tomorrow by 11:30 in all your cities, villages, and towns. We have to come out with a placard. With a placard telling the international community that there has been a robbery, there has been a dacoity over the right to vote, the fundamental right of the people of Pakistan, by no other than the state of Pakistan. Yes. By no other than the state of Pakistan. Exactly. So, I appeal on behalf of Imran Khan to Pakistanis and to all the PTI workers. Tomorrow is the day which will reckon whether the Pakistanis stand for the dream cherished by the Khan, which brings about a independence for the people of Pakistan. Number one. Two, the rule of law. And third, the social justice. I would say the final two words in Urdu. Khawatino Hazrat. ये आपने बताना है Khawatino Hazrat. कि राब्ता ऐप पे इतने वो मैंने बता दिया
खान चाहता है कि पाकिस्तानी कल हफ्ते के रोज 11:30 बजे तक ऐसे निकले जैसे 8 फरवरी को निकले थे। सुनो पाकिस्तानियों, हमने तमाम सहुबतें बर्दाश्त की, अगवा हुए, मारे गए, कत्ल किए गए, शहीद किए गए, हमारी खवातीन पे हाथ डाला गया, हमारे घरों के चादर चादीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। कोई ऐसा जुल्म, कोई ऐसा फिस्तायत रही नहीं जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ न की हो। तो याद रखो, एक दफा फिर इसको जेलने के लिए तैयार हो जाओ। ए वन मोर टाइम, एक दफा निकलना है आपने खान के लिए, जमहूर के लिए, पाकिस्तान में हकीकी आजादी के लिए। खुदा की कसम, लाखों में निकलोगे तो इसी तरह ये लोग जलील और रसवा होंगे जिस तरह 8 फरवरी को जलील और रसवा हुए हैं। 8 फरवरी को मैंडेट को हमने खान को दिया, पीटीआई को दिया। यहाँ पे मैं एक हल्के का जिक्र जरूर करूंगा। हमारी बहन, ये आपने ना राब्ता ऐप का इनको बताया अच्छा, कि राब्ता ऐप में हमारी 2 करोड़ एक मिनट, one thing I would say in English, there is an app which is known as Rabta mobile app, and it functions to generate the voter number and the name of the voter. It was employed, used at large scale on the poll day by the Pakistanis, and I have the statistics that about 2 crore 46 lakh 36,636 vote precepts were issued through this app. Now what does it imply? अगर 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने सिर्फ एक ऐप के जरिए पर्चियां ली है, तो मैनुअल तरीके से जो हमने दिए है और दीगर तरीकों से जो हमने पहले से तैयार किए थे, ये ऐप, दिस ऐप alone certifies as to how many people went for voting in favor of the PTI. आखिरी बात जाने से पहले आपको ये बता दूं, कल इस्लामाबाद में F9 पार्क से मैं खुद क़यादत करूंगा एहतजाज की, और जो लोग सेल्फियों के ख्वाहिशमंद है सुने, और जो लोग चाहते हैं कि हम कल इकट्ठे हो, तो कल सारा दिन इकट्ठे होंगे, एहतजाज करेंगे और प्रेस क्लब पे हमारा एहतजाज इख्तिताम पजीर होगा। अगर हुकाम ने हम पे तशद्दुद करना चाहा, तो मैं उनको एक बात बता देता हूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी उठाता हूं कि इस्लामाबाद के इस एहतजाज में अगर किसी ने फितना फसाद करना चाहा, तो हम खुद उसको पकड़ के हुकाम के हवाले करेंगे। और पीटीआई के तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल पाकिस्तान में भर में होने वाले एहतजाज में ऐसे लोगों पे नजर रखें। कोई भी अगर शरंगेजी पैदा करना चाहे, आपने पकड़ के हुकाम के हवाले करना है। इस्लामाबाद में हम पुरअमन रहेंगे। अगर पुलिस ने हम पे तशद्दुद किया या हमारा रास्ता काटने की कोशिश की, तो मैं वादे करता हूं कि फिर हमारा एहतजाज तब तक रहेगा जब तक नताइज तब्दील नहीं होंगे। हम पे तशद्दुद न करो और हम पे जुल्म न करो। मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल आए इस्लामाबाद में और देखें कि ये क्या दोबारा हमारे साथ ये जिद्दियत करते हैं या इंसान के बच्चों की तरह रवैया अपनाते हैं। याद रखो, अगर उन्होंने हम पे तशद्दुद किया, हम तशद्दुद सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जहां पे इन्होंने तशद्दुद शुरू किया, फिर उसी जगह से हमारा धरना शुरू होगा। और अगर तशद्दुद नहीं किया, तो हम पुरअमन एहतजाज प्रेस क्लब में इख्तिताम पजीर करेंगे। मैं आप सबकी आमद का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, तमाम MPAs, MNAs और तमाम मुतासिरा जो हमारे मेंबरान हैं, जो चारों सूबों से आए, खान की तरफ से, PTI की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू इंडीड। And Intizar Panjota sir. You're all welcome here. As I start the proceedings, I will be talking in Urdu, and parts of my speech, I shall adapt in English, for the convenience of members of the international media that is present here. 2024 का साल जहां इस लिहाज से खुशाइंद है कि इसने
पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शंस मुनक्किद हुए जो कि बार बार डिले किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन में, वहाँ 2024 इस वजह से भी याद रखा जाएगा कि इस साल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड वो इंफ्लिक्ट किया गया पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई के कैंडिडेट्स के खिलाफ। हमारे जो अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त तक हमने कंपाइल किया है उसके मुताबिक 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई हैं और 85 सीट्स जो है वो फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेप्स जो हमारे पास हैं वो हम ले रहे हैं। इनमें से 46 सीट्स वो हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है कि वो ली गई हमारे साथ, जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, और 29 सीट्स वो हैं जिनके बारे में डेटा जो है वो कंपाइल हो रहा है और इन द नेक्स्ट 24 आवर्स वो डेटा भी हमारे पास अवेलेबल होगा। ये जो डेटा हम कलेक्ट किया है इसके हमने 3 बेंचमार्क्स हैं, उनके ऊपर हमने उनको यूज करके हमने ये डेटा कैलकुलेट किया है। एक है जो कि डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन फॉर्म 45 एंड 47, जो दर्जात फॉर्म 45 में है वो फॉर्म 47 में नहीं है। ये पहला बेंचमार्क है। दूसरा बेंचमार्क जो है वो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में वोट जो पोल हुए हैं उनमें फर्क जो है वो इतना ज्यादा है कि बात दफा नेशनल असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली से ज्यादा वोट जो है वो पोल हुए हैं। तो ये दूसरा बेंचमार्क हमारे लिए था। और तीसरा बेंचमार्क जो हमने कंसिडर किया है वो है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स जो हैं वो इन सर्टेन केसेस जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से भी ज्यादा है, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर कोई शख्स आ रहा है जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उसके वो उससे ज्यादा है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो है उनका हम बाकायदा आगाज करते हैं और मैं समाविया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब टेक ओवर करके मामला को आगे बढ़ाएं। समाविया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले हमारे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे मीडिया पर्सनल्स, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आज पीटीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम सबसे पहले एक वीडियो प्ले करेंगे जिस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ जो है वो रिगिंग की गई। तो प्लीज आइए देखते हैं वीडियो नंबर 1। फरद काइंडली वीडियो प्ले कर दीजिएगा प्लीज। इस टाइम ऑफिस में मौजूद है। ये सारा अमला दफ्तर की सिक्योरिटी में पड़े हैं, और कचरे के ढेर में आर आपके ऑफिस में ये बैलेट पेपर्स जो है ओपन पड़े हैं। अपनी वीडियो अभी चलवाएं से अभी चलवाएं से। ओके। थैंक यू जी। मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट होगी तमाम लोगों से, काइंडली स्क्रीन के आगे से हट जाइए। जिस पर्पस के लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है बराए मेहरबानी वो फुलफिल होने दीजिए। काइंडली स्क्रीन के पास से सब हट जाइए। I would request everyone, please स्क्रीन के पास से हट जाइए सब। आप लोगों को प्लीज ये अंदाजा होना चाहिए कि आज इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे सिर्फ आपकी कवरेज के लिए आया है। काइंडली उनको मौका दीजिए ताकि वो उन्हें पता लग सके कि आपके साथ रिगिंग किस अंदाज में हुई है। इसलिए स्क्रीन के सामने से सब हट जाइए प्लीज। थैंक यू। Now I would request शाबाना गुलजार साहिबा कि वो आए और इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज स्टेज के जो राइट साइड पे लोग हैं आपसे रिक्वेस्ट है साइलेंस की। राइट साइड ऑफ द स्टेज कोई नहीं चुप होगा, आज सबका इलेक्शन है। प्लीज राइट साइड ऑफ द स्टेज साइलेंस। थैंक यू। प्रेजेंटेशन प्लीज ऑन कीजिएगा।
हम कर लेंगे, that's our problem. All right, right now I'm addressing the international media, and that's why I'm going to be talking in English. Audience. The second half of the presentation is going to be in Urdu, and Sinabia will present. The first slide, आप जरा देखिएगा जी हमें, we got 1.25 million votes in Karachi, and out of the seats we did not win a single seat. 1.25 million votes only in the city of Karachi. Jamaat-e-Islami received 700,000 votes and not a single NA seat in Karachi. Punjab, we got 13.6 million votes and we were given 55 seats. This is a joke with the people of Pakistan. Next slide, please. Have a look. This is the situation of the National Assembly of Pakistan at 3 a.m. PTI had 154 lead. And please bear in mind that at 2 a.m. is when the counting should have stopped and the RO should have given his form 47. ये right side of stage या चुप कर जाएं या निकल जाएं. Please, इनको कहीं बाहर जाएं. चुप नहीं कर सकते तो सारे बाहर जाएं यहाँ से. जाएं यहाँ से. Please, we don't need you. Out. Next slide please. ये जरा detail देखिए. Left side ये देखिएगा. Again 3 a.m. PTI Independence 154, PMLN 47, People's Party 47, MQM 4, and JUI 4. Next slide please. The countrywide robbery that took place via Form 47 in violation of Article 92 of the Election Act. Just have a look at all the provinces. From Khyber Pakhtunkhwa, we were winning 42 seats and the ECP stole ours and gave us 37th. From Islamabad, we were winning 3 and all 3 were stolen from us. In Punjab, we were winning 115 and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, please, previous slide. In Balochistan, we were getting 4 and we only got 1. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few constituencies, so please bear with me. These are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our Asas card, they take our Kisan card, they take everything that belongs to the people of Pakistan and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NA 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is till 3 a.m. in the morning. And in the morning, once the time has run out for anybody to tabulate Form 47, they gave us 44,000 as a present and ensured that PMLN wins. In the next constituency, same thing. We're winning with 154,000 and in the end they gave us 52,000. They stole 100,000 votes. All the details are here in front of you. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Thank you. Next. Button was here? I know. Please, आगे जाइए. Okay. 234 देख लीजिए. On PTI, we're winning with 47,000 votes against MQM. And our vote is reduced to less than 4,000 in a flash of a second. Next slide, please. I'm going to stop here for a moment and I'm going to ask the team to run the visuals by you. Whatever I've explained, we have it all in PDF form. Please have a look and see the kind of theft and the kind of rigging that took place. And let it be remembered, Form 45 is the authorized form given by the Election Commission of Pakistan to the presiding officer, and the presiding officer signs it in front of the polling agents. Those forms are then tabulated and created into one Form 47. Have a look at the PDF document, the graph please. Open up the graph, ladies. Please start scrolling through them. Have a look at all these NAs. That's 47, 48, 49. Atak 50, Rawalpindi 53, Taxila 54, Rawalpindi 55, Rawalpindi 56, Rawalpindi 57, Chakwal 58, Jhelum 60, Gujarat 64, Sialkot NA 71, Toba Tek Singh NA 106, Lahore National Assembly 126, Lahore National Assembly 128, Pakpatan National Assembly 139,
Multan National Assembly 148. आगे जाते जाइए जी. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Sri Mavia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. आपके अंधेरे में डाका डाला गया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे NA47 के कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, शोएब शाहीन साहब. इन पे तो डाके का कुछ ज़्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा. और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो शोएब शाहीन साहब के वोट थे, लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया. ये होती है रिगिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. ओके जी, अब आते हैं रावलपिंडी की तरफ. हमारे शेर ने, हमारे चीते ने यहाँ से NA56 से इलेक्शन लड़ा, शहरियार रियाज साहब ने, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर किस्म की लीड ली. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीफ अब्बासी साहब की जो शुरू से चोरी में काफ़ी माहिर हैं, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरियार भाई हार चुके थे 3 बजे के बाद. 3 बजे तक शहरियार भाई बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सबकत ले गए उनसे. थैंक यू शहरियार भाई. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. NA236 कराची, आलमगीर खान वर्सेस हसन. आप इसमें देखिए कि किस तरह से, जैसे शामनाना आपा ने भी आपको बताया कि कराची पे जो है बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है कि हमने सारी सीट्स वहाँ से बंद की थी, लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई. तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन साबिर जो है वो जीत गए. और इसमें एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप स्लाइड की तरफ गौर से देखें तो आलमगीर खान के जो टोटल वोट्स थे, उनके जो 0 थे वो इन्होंने हसन साबिर साहब के पलड़े में डाल दिए, और इस तरह से हसन साबिर जो है वो सुबह जीते. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. भाई एक्सक्यूज मी, आई कैन सी द स्क्रीन. थैंक यू. ओके जी, मोहम्मद हारिस मेयो वर्सेस जावेद हनीफ. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रात तक हमारे PTI के कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन सुबह किसी और ने सबकत ले ली. नेक्स्ट. दी ग्रेट अयाज अमीर साहब. कौन नहीं जानता इनको कि इन्होंने कितना ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह. बट अनफॉर्चुनेटली ताहिर इकबाल साहब, उनको रात को वो तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे. तो ये रिगिंग है. इन तमाम चीज़ों से सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को कॉर्नर करने के लिए, किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाज़ जंग जो इन्होंने. थैंक यू जी. यार साहब प्लीज. Now, what were the mechanics of rigging in my Chakwal constituency, NA58? NA58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ, निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Many thought, none of my election agents, no one else. I have all the the original Form 45s. मेरे हल्के में 456 polling stations. The Forms 45 of all these polling stations are present here. My
I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 12,000. The Labbaik got 25,000 votes, and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard, and they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स लेने, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है, 5वें नंबर पे नहीं, 5वें नंबर पे ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे. सो मैं आपको खाली 3 एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट देके फारिग कर दिया. 1300. NA 241 जहां से मैं इलेक्शन लड़ा था, जी आई नो जी. सो NA 241 जहां से मैं इलेक्शन लड़ा था, 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए. 78,000. मेरा रिजल्ट क्योंकि आरओ नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मेरा आरओ जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया. आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया. तो ये हाल है कराची शहर की. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची को प्लीज हाईलाइट करें. थैंक यू वेरी मच. टाइम किसी भी स्पीकर को नहीं किया जाएगा. हमारे पास टाइम कम, इंटरनेशनल मीडिया है, इनका टाइम बड़ा कीमती है. यहाँ पे स्पीचेस न करें, प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 में आपके कितने वोट थे, 47 में आपको कितने वोट थे. मेरे 4,167 वोट थे. पीपल्स पार्टी के 3,278 वोट थे. उनके फॉर्म 47 में 7,000 वोट कर दिए और मेरे 2164 कर दिए. ये आरोप और उनके साथ जो माफिया था, उन्होंने ये जुल्म, ये जबर पूरे सिंध में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के साथ किया है. तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया है वही असेंबली में आए. ये चोर, ये डाकू जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दे. शुक्रिया. तमाम स्पीकर अपना तारुफ कराएं. ये अरबिस्तान से हमारे साबिक एमपी भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में आप सैफुर्रहमान साहब बात करेंगे. नेशनल असेंबली के हमारी उम्मीदवार है कराची शहर से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम सैफुर्रहमान और मैं कराची NA 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ. मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 मेरे हल्के NA 235 में टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने ये 95 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है. और मेरे मध्य मुकाबले MQM के जो कैंडिडेट है, मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं, ये कुरान उठा ले कि उसके पास जो रिजल्ट मौजूद है मबनी है, तो मैं अपनी हार भी तस्लीम कर लूंगा. मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि बैरिस्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं, आप कुरान उठा ले, मैं आपकी ये जीत तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरे शख्स मौजूद है
तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूँ कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने, जिसे आप मैनेज कर रहे हैं, ये झूठ पर और ढकोसले पर मबनी है। और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके कैंडिडेट पर कि ये अपना 45 फॉर्म हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद तरीके इंसाफ के वर्कर ने फॉर्म 45 हासिल किया। और कराची NA 235 के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं शौकत महमूद बसरा मेरा और भाई वो तुम्हारी कंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो, वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा को मुबारक देने आ जाता है। कंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो। मेरी बारी है, आपने साथ वीडियो चलानी है। जगह पे भूले हुए हो, इसके बाद मेरी बारी है, आपने वीडियो चलानी है। आपको अपने हल्का मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया है और शेख आफ्ताब अहमद PMLN बेटे इसके बाद मेरी बारी है, वीडियो चलानी है, वीडियो चलानी है। और मैं 65,503 वोट जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान ताहिर वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान ताहिर, हाफिज साद रिजवी साहब और मलक सुहेल जो कि नूर लीग का था। मलक सुहेल तीसरे नंबर पे था। ये हाफिज रिजवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो तीसरे नंबर पे था और ईमान हाफिज साहब से 22,417 वोट ज्यादा लेकर नंबर 1 पे थी और रातों रात इन्होंने सारे चेंज किए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े सर, थैंक यू। और अल्लाह के फजल करम से खड़े रहेंगे। नहीं, मेरी बारी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जनाब बोले भैया नस्ताइन। मैं शौकत बसरा अभी बाकी है हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्क्रीनें खाली करें नहीं तीनों, ये स्क्रीनों के आगे से बंदे हटे तीनों। ये असेंबली के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई आप लोग खाली करें स्क्रीन। ये तीनों असेंबली खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे। इधर वाली भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी। वो राइट साइड में बंदे खड़े उनको भी उठाएं। सब लोग हटे वहां से, सारे शाबाश हटे। खाली करें स्क्रीन, मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई। हटे आप लोग, हेलो नीचे उतरो स्क्रीन से। बिस्मिल्लाह स्क्रीन से नीचे उतरे। या